Okay, we are live once again. Hello and good afternoon. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel. I hope I'm audible to you guys now. If I'm audible, can I have a very quick yes in the chat box? If I'm audible, visible, everything is all right. Can I have a yes in the chat box, guys? Are you guys here on the stream? Hello. Okay. Okay, great, lovely. So sorry for the delay, sorry for the inconvenience. There was a technical glitch with the drivers of the microphone, and that is why I was not audible at 3 p.m. But here we are. Let's begin the session now. So जब मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी तो मैं ये बोल रहा था कि a new month has started. We are in March now and getting closer to the exam every day. This is the first Hindu analysis session of the month of March. First and second को weekend था. So we are meeting for the first time in this month and I'm excited to begin. So before I present the agenda for the day, I have an important information for you guys regarding today. So today at 8 p.m. on the YT channel, we are going to meet once again and we would be discussing the strategy for GK and current affairs for the next 8-9 months. Okay. Basically, a roadmap for you guys on how to prepare, where to prepare, what resources to follow, how much time to allocate, and any other question which you might have with respect to your GK preparation. As many of you guys were requesting me for a special strategy session on GK, I have heard your request, and today 8 p.m. we are meeting. So make sure you turn up in big numbers and address all your doubts and questions. Okay, so that was the announcement for the day. Today 8 p.m. live on the YouTube channel GK session by yours truly. चलो बात कर लेते हैं आज के एजेंडा की. काफी डिले हो गया है आज के सेशन में, बट ठीक है, लेट्स गो. The first topic for the day is election commission and voters. Now what is this regarding? ये क्या हुआ भाई? Oh, wow. I've seen this. This is some crazy shit. Wait, let me just reconnect this. Damn it. कुछ तो crazy हो गया है मेरे टैब के साथ. Just a moment, guys. Wow, क्या हो गया ये? This is weird. Just give me a moment, I'll figure this out. Tab has gone crazy, yeah, right. कोई नहीं. आज लग रहा है थोड़ा दिन खराब है अपना. थोड़ा पता नहीं क्यों टेक्नोलॉजी के साथ मेरा पंगा चल रहा है इस साल में. 2024 we had a smooth run. कभी कोई ग्लिच नहीं आता मेरे सेशन में, ना ऑडियो ना वीडियो, बट seems like not that lucky this year. ठीक है, nevertheless कुछ तो इशू आ रहा है पेन में, कुछ तो क्रेजी हो गया है इस पेन टैबलेट में, बट ठीक है, इसके बिना भी हम क्लास ले सकते हैं, इतने भी हम डिपेंडेंट नहीं है टेक्नोलॉजी पे. विल जस्ट प्रोसीड विदाउट द पेन. मैं बस लिख नहीं पाऊंगा अच्छे से. I'll try to write with my mouse if possible, but forgive me if I'm not able to write a lot in today's session. चलो कोई बात नहीं. We'll discuss the agenda for the day. The first is election commission and voters. The second is US spacecraft on moon. This is a private spacecraft which has landed on the moon. And thirdly, there's an editorial. Thirdly, there's an editorial article called Care and Economic Policy. This talks about the allocation for this year's budget towards care infrastructure for females. So this talks about how this budget has seen increase in allocation of the gender budget, but still we are not really focusing on a lot of infrastructure for women, which increases their participation in the labor force. That is what the article is all about. Then of course we'll do vocabulary. दूसरा जो editorial article है, that is about the 3-language formula, जो कि हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं. We'll just have a very quick brief about it and then
Let's see what else do we have in today's newspaper. So आज का न्यूज़पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. आई होप उसमें कोई दिक्कत ना आए. Okay. Can I have a yes in the chat box if the newspaper is visible to everyone? A quick yes in the chat box. Guys, is the newspaper visible to you all? Yes. Lovely. ठीक है, चलो. So the first news of the day is Election Commission to remove same voter ID numbers across states, and this is something which we're going to discuss in a little more detail. So जब एक वोटर आईडी बनता है तो हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिक नंबर दिया जाता है विच इज कॉल्ड एन एपिक नंबर. ओके, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इन शॉर्ट एपिक नंबर. कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि in some reports it was found out that some individuals of a particular state had a matching epic number, which was matching with individuals from a different state, a different constituency, but still it was an issue because दो लोगों का अगर same voter ID number है, so that is a problematic thing, right? For democracy, for the voting process, for the sanctity of the process. Now, जो पोल पैनल है उन्होंने कहा कि दे विल इंश्योर दैट ईच वोटर गेट्स अ यूनिक एपिक नंबर मूविंग फॉरवर्ड. एंड उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैनुअल मेथड यूज किया जा रहा था पहले, जिस वजह से सेम नंबर सीरीज चल गई दो अलग अलग जगह और डुप्लीकेट नंबर्स क्रिएट हो गए. अब तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पैनल ने एडमिट किया, इसका मतलब है कि दिस प्रूव्स देयर फ्रॉड, इलेक्शन फ्रॉड किया हम लोगों ने. तो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा. अब ऑटोमेटिक जो प्रोविजन है वो कैसे वर्क करता है, उसको एरोनेट कहते हैं, ERONET. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड व्हाट इज दिस होल इशू अबाउट. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव यूके एंड अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेन डील, सेज स्टारमर. हु स्टारमर? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके. तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम फ्रांस और बाकी कंट्रीज के साथ मिलके यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू saw that discussion between Zelensky and Trump, which was quite a heated argument. I won't call it a argument. It was more of Trump trying to pressure Zelensky into, you know, it was more of bullying and less of a discussion. If you watch that video, to be honest. But coming to the point is कि कुछ भी उस discussion से fruitful नहीं निकला. And European Union, we all know, has been feeling sidelined thoda sa by the US because of US getting proximate with Ukraine. Oh, not Ukraine. US getting proximate with Russia and trying to put pressure on Ukraine, whereas the European Union, which has been supporting Ukraine for a very long time, are feeling sort of betrayed. So they're planning to back Ukraine and talk to US about this and solve this conflict for them. So that is what the thing is. Okay, Kerala man on visiting visa to Jordan killed in army firing. Four more bodies pulled out in Uttarakhand. Rescue operation ends. So this news we did not discuss because this came on the weekend where we don't have classes. But what do we call that? Avalanche. An avalanche came in Uttarakhand a couple of days ago, which was quite a tragic disaster. Around 20, 25 people got trapped. 23, I think. 23 people got trapped in that avalanche. What is an avalanche? When a big chunk of snow gets broken off from a cliff or a glacier and comes rolling down and engulfing everything within. So that is an avalanche which came in Chamoli in Uttarakhand. And rescue operation जो है इसका खत्म हो गया है. On the right hand side you see fraud charges, court orders FIR against ex-SEBI chief and 5 others. So you can see the picture of the ex-SEBI chief Madhvi Puri Book. She has recently been replaced by a new SEBI chief. Can you guys tell me the name? मैंने आपको note करवाया था नाम as a one-liner in the previous Hindu analysis. Let's see how many of you remember the name of the new chief of SEBI, which is the Securities and Exchange Board of India. Then we have city news, which is not important for us, so we'll just move right ahead. Then state-based news, Bengal on boil as rallies mark SFI's call for arrest, resignation of minister. Oh, this is not important. Politics है ये सारा. Politics and crime-based news are not important for us, so we'll move ahead. Rescue teams will reach workers in tunnel in a few days. This is the Telangana tragedy. Okay. Nothing important from CLAT perspective here.
Okay, we're down to the editorial section, the student and the three language debate. As I said, we have already discussed the new education policy and what is the three language debate all about. What this particular article addresses is that is the three language policy even necessary, or is it actually benefiting students, or are we just pushing for a cause which is not that beneficial, and we can focus on better things like improving the quality of education rather than making students learn a third language. So he makes a few points. He says that although it is understood that learning a new third language can help in the cognitive abilities, increasing the cognitive ability of a child, but are we actually going to get benefit from that process? Because when you look at the education infrastructure, when you look at the quality of education in the country, especially primary education, we firstly need to improve basic things, basic necessities, quality of teachers, quality of content, quality of pedagogy, and student turnout, student enrollments, things like these, rather than getting into the politics of two languages versus three languages. Another point which he argues and makes is that he does not find a lot of tangible benefit with the three language policy. He says that two languages are more than enough, and students don't have enough time to even study the subjects which are taught to them in school, leave aside the concept of third language. So he says that rather than focusing on a wider scheme of things, we should focus on deeper learning, कि जो आप सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो rather than 10 चीजें सीखने के. That is what his argument is. Another point which he makes against the three language policy is कि अगर किसी को तीसरी language की जरूरत पड़ेगी प्रोफेशन में या फिर लेट्स से माइग्रेशन में टुवर्ड्स अ डिफरेंट स्टेट और कंट्री, तो वो तब सीख लेगा व्हेन द प्रोफेशन डिमांड्स. ऐसा तो नहीं है कि आप नई लैंग्वेज बाद में जाके नहीं सीख सकते हो. अ लॉट ऑफ पीपल लर्न द लैंग्वेजेस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और द कंट्री व्हेन देयर प्रोफेशन रिक्वायर्स देम टू. सो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है दैट दिस वुड प्रमोट कल्चरल कोहेजन एंड कल्चरल इंटीग्रेशन and bring people closer, that does not make a lot of sense, is what he argues. ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो इसको. He says that this is a problematic hypothesis, that there is no academic merit in thrusting a third language on students. There could be a risk of raising a generation that is handicapped to compete nationally. He's saying that जो थ्री लैंग्वेज आप पीछे पड़े हो उसके उस वजह से जो हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो इतना नीचे जा रहा है कि वी आर producing students who are not able to compete properly with the top scoring students. Then they say that there should be focus on teaching and learning. This I already explained. Then he says the politics and the student. He says that the right or wrong of the ruling party's politics on the issue is not the subject of this article. It is important to acknowledge from a child development perspective that it is a two-front political battle. One is stopping Hindi imposition on the state, and two, fighting to retain robust status of English nationally. Second is a more challenging task. He's saying that if nationally the landscape is likely to change with Hindi progressively replacing English, in spirit, even if not in letter, the state's politics should factor this reality and seriously consider insulating the child's development from the crossfire of पॉलिटिकल बैटल. इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर की लड़ाई में बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, इन वेरी सिंपल टर्म्स. Since there is no academic merit in thrusting a third language, Hindi could be offered as an option as a third language from middle school. This could be started in schools and district headquarters, and then, depending on the momentum of Hindi, we'll see if Hindi can replace English at the national level. He's saying a rigid political position could result in a generation of students that is handicapped to compete. The issue should be a debate and discussion and not a war that destroys the future of the youth. ठीक है जी. On the left hand side, you see tune trouble. The power to block content must be used sparingly. इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक मैगजीन थी विकातन करके, विकातन प्लस फ्रॉम द विकातन ग्रुप, एंड उन्होंने एक कार्टून बनाया मोदी जी का, बोल्ड मूव आई मस्ट से, एंड उसमें मोदी जी वाज टाइड इन चेन्स इन फ्रंट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. सो as we know, the current situation of our country, that cartoon got a lot of outrage, and an FIR was filed for XYZ causes, XYZ reasons. And then they challenged it in the court that this is a violation of freedom of speech and expression and also a violation of freedom of the press. And उसी पे अब जो है केस चल रहा है, तो ये आर्टिकल वही डिस्कस करता है.
The order of the Ministry of Information and Broadcasting directing the removal of cartoon featuring PM Modi from a Tamil magazine's website is unwarranted and may not fall under any of the permissible grounds for such removal. Then वो magazine के बारे में बताया है and how they are fighting a legal battle. They say that the ministry's move of banning it is against the cartoon and it goes against both freedom of expression and freedom of speech. It's a piece of trenchant political commentary as it depicted Modi in shackles, in chain, in presence of Donald Trump. This is a reference to criticism voiced in some quarters that Modi failed to protest against ill treatment of illegal immigrants. It is even more concerning that the website itself has been rendered inaccessible to some users, apparently based on undisclosed orders or informal instructions to web service providers. While a formal order to take down content is provided for in the law, it will be wholly untenable if the website was sought to be blocked without recourse to established procedure. Then they talk about the legislation. Section 69A of the IT Act empowers the government to block content on specific grounds. अब क्या grounds है? Interest of friendly relations with foreign states or public order or preventing incitement to the commission of an offense. अब देखो इससे कोई offense तो commit करने के लिए incite नहीं हो रहा. इससे क्या हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप यूएस के साथ डैमेज हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो एंड आई पर्सनली डोंट थिंक सो. और पब्लिक ऑर्डर क्या इससे डिसरप्ट हो रहा है? अगेन आई डोंट थिंक सो. बट इट इज नॉट नोन विच ऑफ दीज ग्राउंड्स हैज बीन इन्वोक्ड एज द ऑर्डर इज कॉन्फिडेंशियल. तो आप बता भी नहीं रहे कि आपने किस ग्राउंड पे बैन किया है. दैट इज some other level of censorship. How an order passed in the exercise of the statutory power can be deemed a secret is inexplicable. That means cannot be explained. Even in times like present, when taking offense is a national pastime, as well as a reason for several CMs to unleash the police on detractors, cartoons ought to enjoy greater immunity than the written word. In this case, it is doubtful if political criticism through cartoon can be called affecting friendly ties with the US or undermining public order. Center would do well to reverse the blocking order soon. Power to block content ought to be used sparingly. यानी कि कम यूज करो अपनी इस पावर को, mainly to combat offensive content like hate speech, incitement to violence, and child pornography, but not in deference to political demand and without regard to freedom of expression. What do you guys think? What is your take on this? Was this justified or unjustified? Like the banning of a cartoon? Because what I have witnessed while I have been reading newspapers from the past few years, at least 6-7 years, if not more. पहले तो कम पढ़ता था, लॉ स्कूल के बाद से पढ़ने लगा. What I have observed is इस टाइप के कार्टून्स तो बहुत टाइम से आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में. कार्टून्स मेकिंग फन ऑफ पॉलिटिशियंस. You see Amul butter ke ads making fun of various national issues. I mean, humoristic, not exactly making fun, but a humorous and satirical or a sarcastic take on national issues and international issues. And I think humor should be taken like humor. It should not just be extrapolated as defamation or something too extreme. That is just my opinion. You can agree or disagree to that, but I believe thoda sa we are going backwards in terms of freedom of speech and expression. But theek hai, can't really do much about it. Okay, the next article talks about multiple bullies at work, how to create a multipolar world. Now, this is again related to geopolitics, and this is regarding the concept which we have already discussed, the geopolitics between US, Russia, and Ukraine. So आप लोग पढ़ सकते हो इसको, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, but this is an easy article, you will easily understand this. On the left hand side, you have long roots. Entrenched patriarchal biases must be erased from society and the government. Now, this talks about the ousting of 2 civil judges. Recently, 2 civil judges का termination order आया था and they were fired on grounds of inefficiency, कि वो लोग efficient नहीं है judiciary के लिए. तो ये article discuss ये करता है कि on one hand we talk about how we need to include more women into the Indian judiciary, we need to increase participation of women in various fields. On the other hand, we are quite brutal in terms of our patriarchal biases, which are deeply rooted in the society. In terms of what, यहाँ पे example एक दिया गया है कि one of the judges was terminated on the grounds that she was inefficient, and later it was found out that she was on a maternity leave or she was pregnant or something like that. I think miscarriage. Oh, yeah. Who had been sacked for inefficiency despite the fact that one of them had suffered a miscarriage.
Justice B.V. Nagaratna said it was not enough to find comfort solely in growing number of female judicial officers if we are unable to secure for them a sensitive work environment. So they're saying that just having the numbers is not enough if the work environment is not conducive, if the work environment is not sensitive or sensitized enough to enable them to work freely. That is primarily the whole crux of the article, I would say. It talks about the judgment of Justice B.V. Nagaratna and how she has stepped forward in order to put this take of how we need to protect women's rights in the Indian judiciary and in general as well. ठीक है चलो next is centering care in India's economic policy. Now this is another article which we're going to discuss in a little more detail, which talks about the allocation of gender budget in this year's budget, which has increased by 37.3% from the previous year and accounts for 8.86% of the total budget. Now they say this rise is mainly due to a new yojana, PM Garib Kalyan Ann Yojana, जिसमें women भी हैं of course, and it accounts for 24% of the gender budget. GB here means gender budget, rather than being substantially driven by investments in care infrastructure or new gender responsive schemes. तो मतलब ये है कि जो बजट आपने बढ़ाया है, ठीक है, बजट बढ़ाया अच्छी बात है, बट वो बजट विमेन सेंट्रिक स्कीम्स में जा ही नहीं रहा. वो तो सिर्फ कल्याण अन्न योजना में जा रहा है. मैक्सिमम ऑफ इट लाइक 24% इज अ बिग चंक. They are saying that we need critical investment in care infrastructure, reinforcing the persistent invisibilization of care work in India's economic planning. आगे चल के ये लोग बात करते हैं about women's participation in the labor force, how there are a lot of unpaid females who do the domestic work, and that is not recognized as work at all. Apart from that, she also discusses the plight of women who are not from very privileged backgrounds, who have to do both the things. They have to work to earn money for the family, and they also have to do household chores, which again puts an additional burden on them. So they talk about how men, just only 1.1% of men take care of household care responsibilities, whereas 53% of it is women. So that is a problematic number. Globally, women spend an average of 17.8% of their time on unpaid care and domestic work, with women in the global south bearing higher burdens. And even within the global south, I think this article mentions it somewhere that India is the worst hit by this. Like even countries like Africa, not country like Africa, countries in Africa and countries like China, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा जो है unpaid care and domestic work नहीं कर रही women जितना इंडिया में कर रही है. So big a long journey towards feminism and a long road to go before we are able to eliminate patriarchy because it's so deep rooted. That is what the article talks about. And then she gives some solutions as well, which we'll talk about. ठीक है जी. चलो, moving ahead, women in South India, Delhi, Punjab have higher levels of obesity. So, okay. High consumption of fried foods and aerated drinks is linked to rising obesity rates. अब इसमें मैं एनालिसिस क्या ही दूं आपको कि women are getting obese and over, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक, मेरे को बहुत डर लगता है इन चीज़ों पे बात करने में. So I would not comment a lot on this topic. You can see the numbers and stats. It's just talking about how women have been uh, moving towards obesity because of processed food and all of those things. Chalo, theek hai. Moving ahead, mind our language, the variance in Hindi and English speaking across India. This is again a stat-based article which talks about Hindi speaking and English speaking in terms of our education system. So this is a good article. You guys should read this article. It would give you a lot of insights. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि थ्री लैंग्वेज वाला डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल. Cognizant and Infosys filed lawsuits. Like this is not important for you guys. Court orders FIR against ex-SEBI chief, 5 others. Okay. Union Minister's daughter harassed in Maharashtra to held. Tamil Nadu fishermen to meet Jaishankar over arrest by Sri Lankan Navy. Okay. MP Minister might resign after begging remark. क्या remark दे दिया इन्होंने? Day after MP Cabinet Minister Prahlad Patel said people had got used to begging before the government. Oh, okay. No comments. ठीक है. Moving ahead,
EC engaging in damage control, says Trinamool Congress. This is the whole same voter ID wala issue, epic number wala. Nurture all languages, no need for confrontational stance, says our Vice President Jagdeep Thankar. Okay, this is all politics. You can just move ahead. India should not support Afghanistan men's cricket team at the cost of women who are facing bans by the Taliban. So it is what the title says, and the thing is that although Taliban has now become a normal thing in Afghanistan, and they have assumed power in governance. And we have also started our bilateral relationships with Afghanistan. Restored, not started, restored our bilateral relationships. This article argues that हमें उनकी मेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी women टीम को बैन कर रखा है. I think the women team of Afghanistan operates from Australia. Australia is training them, and I think something like that is working out as an arrangement. But Afghanistan, mein Afghani women are not allowed to play cricket. So that is what it is. EPFO claims huge liability in dispersing higher pension. Renowned artist Himmat Shah dies of heart attack. Okay. Household budget aspect to note off. Okay. Israel cut off Gaza aid to pressure Hamas to deal, accept new ceasefire deal. Russia praises Trump, blames Europe for prolonging war. So Russia और ट्रम्प भाई साहब की दोस्ती हो गई है. देखो ये रहा कार्टून एक और. You don't have the cards right now. This was a statement he made when he met Zelensky. तो इसके टाइप के कार्टून्स लाइक जमाने से आते जा रहे हैं. मतलब पॉलिटिशियंस पे अभी पता नहीं अचानक से क्या हो गया है हमारी देश को. सेंसिटिव हो गए लोग बहुत. Anyway, in a first private US spacecraft lands upright on the lunar surface. A US company successfully landed. चलो इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में. पूरा बता ही दूंगा मैं आपको. What is this all about? Basically, a private company has been able to successfully land in an upright position on the moon. ठीक है. कंपनी का नाम है Firefly Aerospace. इनके मिशन का नाम है Blue Ghost Mission 1. So we'll discuss the details. बाकी इंडिया पहुंच गई है चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा के. इट वाज अ गुड मैच. देन विदर्भा कंप्लीट्स अ वेल डिजर्व्ड ट्रायम्फ. सो विदर्भा ने जीत ली है रणजी ट्रॉफी. जीती है ना. आई थिंक सो. Yeah, it's the Ranji Trophy. So Vidarbha has won the Ranji Trophy for this year. Then, yeah, I don't think we have anything else which is interesting. Chess redefined races to glory in the Indian Turf Invitation Cup. Okay, I think that's pretty much it for the newspaper, guys. Let's come back to discussing the three articles which we were going to discuss. Okay, chat box में क्या चल रहा है? Any idea when its YouTube analysis is going to come? I'll let you guys know when it's about to come. Okay, mock का discussion चल रहा है. ठीक है. Alrighty, let's talk about the discussion of these three articles. So first is Election Commission and voters. Although we have discussed most of it in this particular article, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए is ये जो एपिक नंबर है ये पहले एक मैनुअल प्रोसेस से एलोकेट हुआ करता है. दिस इज अ 10 डिजिट नंबर विच इज प्रिंटेड ऑन द आईडी कार्ड विच इज गिवन टू एवरी इलेक्टर. आप अगर 18 के हो तो आपका भी बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड. बनवा लो सो दैट यू गाइस कैन वोट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. एंड कमिंग बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक वाला प्रोसेस, तो अब जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया है, अब देयर इज अ डेटाबेस विच इज मेंटेन्ड थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ईरोनेट. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अरे यार बहुत मुश्किल है बिना पेन के लिखना. ईरोनेट, ठीक है समझ गए ना आप लोग. ईरोनेट है प्लेटफॉर्म का नाम. इससे आज लिखा तो नहीं जाएगा. पेन इज नॉट फंक्शनिंग राइट. कुछ तो गड़बड़ है आज टेक्नोलॉजी में. बट हाँ, तो और क्या चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए कि इट्स अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म विच इज डेवलप्ड फॉर द इलेक्शन ऑफिशियल्स. एंड इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में आप वोटर आईडी कार्ड इशू कर सकते हो. दिस इज हेल्पफुल इन रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, डिलीशन ऑफ योर नेम्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. बाकी तो मोरलेस हमने ये डिस्कस कर ही लिया. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन. दिस इज
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इस टाइप के न्यूज़ काफ़ी बार पिकअप करते हैं क्लैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स वाली एजेंसीज, बिकॉज दिस इज ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग फर्स्टली, सेकेंडली दिस इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि यूएस की एक कंपनी है जिसने संडे को अपना स्पेसक्राफ्ट जो है प्राइवेट मिशन में लैंड कर दिया है मून पे. कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस. मिशन का नाम है ब्लू घोस्ट मिशन 1. ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है. ये लैंड हुआ है मून पे. जिस जगह पे लैंड हुआ है उस जगह का नाम है मॉन्स लैट्रियल. MONS मॉन्स, LATREILLE लैट्रियल, which is a volcanic formation on the surface of moon. तो इस कंपनी के सीईओ का नाम भी आपको पता होना चाहिए. इनके सीईओ का नाम है जेसन किम. जेसन किम भाई साहब ने बोला कि इनका स्पेसक्राफ्ट जो है स्टेबल और अपराइट तरीके से लैंड हो गया है. इन्होंने पहले भी एक बार लैंडिंग अटेम्प्ट करी थी पिछले फरवरी में, बट वो फेल हो गई थी. साइडवेज लैंड हो गया था. इस बार अपराइट लैंड हो गया है. एंड काफ़ी सारे इमेजेस क्लिक करे हैं इस लैंडर ने, मून के भी, अर्थ के सरफेस के भी. एंड इसका निकनेम है घोस्ट राइडर इन द स्काई, बिकॉज इसका नाम भी है घोस्ट मिशन 1, सो निकनेम है घोस्ट राइडर. एंड नासा के साथ एक पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ में इन्होंने कंडक्ट किया था ये मिशन. दिस इज अगेन टू कैरी फॉरवर्ड नासा's आर्टेमिस मिशन. आर्टेमिस मिशन इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द मैन टू मून अगेन, सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू मून अगेन. तो गोल्डन कलर का लैंडर है ये, एंड इसका साइज एक लगभग हिप्पो के बराबर है. ये मैं नहीं बोल रहा, ये आर्टिकल में लिखा है कि हिप्पो के बराबर इसका साइज है. एंड अर्थ से लॉन्च हुआ था ये 15 जनवरी को. कैसे लॉन्च हुआ था? थ्रू अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट, जो कि एलॉन मस्क भाई साहब की कंपनी है. एंड काफ़ी सारी इसमें फुटेज कैप्चर करी ऑन इट्स जर्नी, विच वॉज अ 2.8 मिलियन माइल जर्नी. मिलियन मतलब होता है 10 लाख, माइल मतलब होता है रफली 1.6 किलोमीटर्स. तो यू कैन डू द मैथ कि कितने किलोमीटर बनेंगे. आर्टिकल में 2.8 मिलियन माइल लिखा है, so मैं आपको वही बता रहा हूँ. एंड इसमें 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें देर इज अ सॉइल एनालाइजर, देर इज अ रेडिएशन टॉलरेंट कंप्यूटर, देर आर मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स विच वुड सेंड बैक देयर रिपोर्ट्स बैक टू द अर्थ, विच वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मून बेटर. अब ये ऑपरेशन टाइम इसका कितना रहेगा? इसका ऑपरेशन टाइम वुड बी 1 लूनर डे. 1 लूनर डे का मतलब होता है अर्थ के 14 दिन, क्योंकि मून जो है 2 चक्कर काटता है अर्थ के इन अ मंथ, है ना. आप देखते हो विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ फुल मून, देन एकदम गायब हो जाता है मून, देन फिर से फुल मून आ जाता है. तो मून जो है 28 डेज में 2 साइकिल्स पूरी करता है. सो 1 लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डेज तक ही ऑपरेट करेगा दिस ब्लू घोस्ट मिशन, एंड इट वुड बी सेंडिंग ऑल इमेजेस बैक टू द अर्थ. एंड 14 मार्च को एक स्पेशल इमेज आएगी, क्योंकि दैट इज द डे वेयर देयर इज अ टोटल एक्लिप्स. तो लूनर एक्लिप्स होने वाला है एंड उसको ये कैप्चर करेगा. उसके अलावा 16 मार्च को एक लूनर सनसेट होगा, उसको भी ये कैप्चर करेगा, विच वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द सोलर इन्फ्लुएंस ऑन द मून इन अ मच बेटर वे. तो यही कुछ डिटेल्स हैं इस आर्टिकल की जो आपको पता होनी चाहिए, इस कंपनी के बारे में, इस मिशन के बारे में, इनके सीईओ के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में, इसके ड्यूरेशन के बारे में, इसके रॉकेट के बारे में, और इसके पर्पस के बारे में. तो यही सारी चीज़ें, ठीक है. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Now, lastly, talking about the third editorial article about centering care in India's economic policy. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कि बजट में जो एलोकेशन हुआ है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्कीम की वजह से बढ़ गया है. ऐसा कोई विमेन सेंट्रिक स्कीम्स की तरफ कोई मेजर एलोकेशंस नहीं हुआ. सिर्फ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में जो हमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाना था, उसकी वजह से नाउ देयर हैज बीन अ 37.3% इंक्रीज इन द जेंडर बजट अमंग द टोटल बजट. अब काफ़ी सारे स्टैट्स इस आर्टिकल में कोटेड है, मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूँ. सबसे पहले ये लोग कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, 17.8% ऑफ टाइम जो है विमेन का जाता है इन अनपेड केयर एंड हाउस होल्ड वर्क, डोमेस्टिक वर्क. उसके अलावा ये बताते हैं इंडिया में केस थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग है, जहाँ पे 40% मोर ऑफ दिस बर्डन इज शेयर्ड बाय इंडियन वुमेन एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, कंट्रीज लाइक चाइना. तो वहाँ से 40% ज़्यादा खराब सिनेरियो है इंडिया में. एंड आईएलओ की रिपोर्ट इन्होंने कोट करी है. आईएलओ इज योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. मैं चैट बॉक्स में बताओ आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से टेक मी इन द चैट बॉक्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ. तो आईएलओ कहता है कि 53% ऑफ इंडियन वुमेन रिमेन आउटसाइड द लेबर फोर्स ड्यू टू केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की घर का ध्यान रखना है, बच्चों का, फैमिली का ध्यान रखना है. उस वजह से आधी से ज्यादा विमेन जो है हमारे वर्क फोर्स में आ ही नहीं पा रही हैं एज कम्पेयर टू मेन. में कितने परसेंट मेन के साथ ऐसा हो रहा है कि
देख रेख करने की वजह से वो वर्क फोर्स में नहीं आ पा रहे, 1.1% मैन. So that is a lot of you could say inequality in terms of the two genders, and इसको कम करने की जरूरत है. आर्टिकल ये भी कहता है जो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं वो 17 से 19 घंटे काम कर रही हैं एवरी डे, दे आर बैलेंसिंग देयर domestic duties and their jobs or paid work, which is again intensifying the gap between the rich and the poor, and also impacting their well-being. उसके बाद ये लोग बात करते हैं एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि मेन क्रक्स है इस आर्टिकल का, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विमेन के लिए बढ़ाना है. एंड इसमें हम बात करते हैं वाटर की, क्लीन एनर्जी की, सैनिटेशन की. एंड दे से दैट women spend up to 73% of their time on these activities, जैसे पानी भर के लाना, जैसे घर में खाना वाना बनाना, सैनिटेशन देखना, साफ सफाई देखना. तो दे आर सेइंग कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अप टू द मार्क नहीं है अभी. एंड दे से दैट women, एक और इन्होंने एग्जांपल दिया कि women spend nearly 5 hours daily collecting water as compared to 1.5 hours for men. कि 5 घंटे तो women दूर दूर चल के जा रही हैं और पानी लेके आ रही हैं, 5 घंटे उसी में जा रहे हैं. So that is a major problem which we need to solve. Water related जो unpaid labor है इंडिया में, they are saying ये $1.4 billion तक पहुंच जाएगा by 2050 due to the high rate of emission. And they are saying कि recent एक और survey है, economic survey, which says that जो direct public investment है उसका 2% of the GDP के बराबर, यानी कि 11 million jobs जो हैं हमें create करनी होंगी in order to ease this care burden. So अगर ये सारी वुमेन वर्क फोर्स में आ जाती हैं तो 11 मिलियन मोर पीपल वुड बी जॉइनिंग द वर्क फोर्स, विच इज अ बिग बिग नंबर. एंड देयर सेइंग इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि वी नीड टू फॉलो अ 3R फ्रेमवर्क. तो इन्होंने ये खुद का बनाया है 3R फ्रेमवर्क, विच व्हाट आर द 3Rs? द 3Rs आर recognize, it means firstly recognize their work, secondly reduce, and thirdly redistribute. Recognize, reduce, and redistribute. And fourth is the representation, which is the fourth R, represent. They're saying that this would ensure that policies which are made for the women are both relevant and transformative. तो जो भी काम करें हम ये 3R 4R के अराउंड करें, so that would be much helpful. एंड they're saying कि सेंटर को है जो ये गैप्स, जो जैसे वाटर सैनिटेशन रिलेटेड गैप्स हैं, ये सारे कम करने चाहिए. इसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी चल रही हैं. देयर इज जल जीवन मिशन विच इज गोइंग ऑन टिल 2028, जो जिसका टारगेट तो है कि 100% ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर पहुंचा देंगे सब घरों में. But let's see, are we able to achieve that or not? So that is what the article talks about, care infrastructure for women and recognizing their work, which is a good article. Now, that is all about the analysis part for today's newspaper. Let's do the vocabulary for the day, guys. The first word is presentiment. Presentiment मतलब किसी खराब चीज के होने का आपको इंडिकेशन हो जाना, आभास हो जाना. A feeling that something bad will happen. Feel, fear, suspicion, premonition भी कहते हैं इसको. He had a presentiment of disaster. The second word is farce. Farce मतलब होता है दिखावा कह लो या फिर मजाक कह लो. A poor, insincere or insulting imitation of something. Parody, joke, caricature are synonyms. Tribute, homage, seriousness are antonyms. The whole procedure has become a complete farce. मतलब एक तरीके से भद्दा मजाक, उस तरीके से है ये इसका कॉन्टेक्स्ट. प्रोडिगल मतलब होता है गिवन टू स्पेंडिंग मनी फ्रीली और फुलिशली, एकदम पैसे उड़ाना आयाशी में. वेस्टफुल, प्रोफ्लिगेट, जेनरस. एंटोनिम्स आर फ्रूगल, थ्रिफ्टी एंड इकोनॉमिकल, यानी कंजूस. द प्रोडिगल चाइल्ड ऑलवेज स्पेंट हर अलाउंस द मिनट शी गॉट इट. So that is what prodigal is. Someone who cannot control their spending of free spending of money, foolish spending of money. ठीक है जी. So the words are prodigal, farce, and presentiment, and that brings us to the end of today's class as well, which went through a lot of technological hiccups, but here we are. Bram is saying, when are we going to have the YouTube analysis for Prime Mock 1? Very soon, yeah. Pretty soon. I'll just check with the people who are going to do it, and I'll let you guys know probably tomorrow. Okay. Also, reminder once again, आज 8 बजे, today at 8 p.m. we are having a special session for you guys for GK, how to plan your GK preparation for this year. So make sure that all of you attend that at least.
watch it if you're not able to attend live, but I would recommend that you watch it live because you would be able to communicate with me and ask me doubts or clarifications then and there. If you have any doubts related to GK, bring them in the session. I'd be happy to address them. आज मिलते हैं 8 बजे. That is all for today's class, guys. Thank you so much for participating. I'll see you all at 8 p.m. Once again, bye bye. Take care. Signing off.